Hello everyone, I am Ruchi. Welcome to my channel Reckon Classes. Today I am going to teach you a lesson on partnership for competitive exams. We have many competitive exams like SSC, PO, MBA, CAT, MAT, GMAT, railways, insurance, income tax, and state services exams, etc. So, this topic is useful for all competitive exams. Let's start. Partnership. A partnership is a formal arrangement by two or more parties to manage and operate a business and share its profit. Now, types of partnership. First one is simple partnership, in which the capital of all the partners are invested for the same time. In this partnership, the gain or loss is distributed in the ratio of their investment. So, suppose A invests rupees X and B invest rupees Y. So, profit share is X is to Y. Clear? So this is called simple partnership. Now second one is compound partnership, in which the capital of the partners are invested for different time periods. In this partnership, the equivalent capitals are calculated for a unit time. For a unit time. So suppose A invest X rupees for A invest X rupees X for suppose R months and B invest rupees Y for S months. So their profit ratio is XR is to YS. So this is the profit interest. This is the profit ratio. XR is to YS. Now third one is working and sleeping partners. A partner who manages the business is called working partner, and the partner who only invests money, he doesn't do any managerial work or administrative work, is called sleeping partner. So these are some types of partnerships. Now let's do some examples. Example number first. Ram, Sham and Neil started a business by investing 1 lakh rupees 1 lakh 20,000, rupees 1 lakh 35,000 and rupees 1 lakh 15,000 respectively. Find the share each out of an annual profit of rupees 56,700. So here ratios of shares of Ram, Sham and Neil equal to ratio of their investment. This is equal to 1 lakh 20,000 is to 1 lakh 35,000 is to 1 lakh 15,000. So this is equal to, हम इसका रेशो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8:9:10. तो sum of ratios equal to 8 plus 9 plus 10 equal to 27. Therefore, Ram's share equal to राम का कितना 8/27 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है 56,700. सो 56,700 इतना रुपीज़.
सो दिस इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 16,800. Now second one is Sham's share. Sham's share equal to rupees. इसका कितना है 9/27 into 56,700 and this is equal to rupees 18,900. And last one is Neil's share and Neil's का कितना है 10 is so rupees 10/27 into 56,700 and this gives rupees 21,000. So these are answer: Ram's share, Sham's share and Neil's share. Example number second. A, B and C enter into partnership. A invests 3 times as much as B invests and B invests 2/3 of what C invests. At the end of the year, the profit earned is 6,600. What is the share of B? Now, first let C's capital equal to rupees X. So C की X हो गई, then B's capital equal to rupees 2/3 of C, B's 2/3 of C, and A's capital is 3 times as B, so means rupees 3 into 2/3x and this gives rupees 2x. Now ratio of their capitals. So ratio of their capitals equal to A's share 2x is to B's 2/3x and C x. So this gives 6:2:3. Now sum of the ratios equal to 6 plus 2 plus 3 gives 11. Hence अब हमको क्या निकालना है? B's share. Hence B's share equal to 11 में से कितना शेयर है उसका? 2. So rupees 2/11 into total profit is 6,600 into 6,600 कैंसिल कर देंगे तो 6 times 0 आ जाएगा. This gives R equal to rupees 1,200. So 1,200 is our answer. Example number third. A and B invest in a business in the ratio 3:7. The business makes a profit of rupees 60,000 in a year. They decided to distribute the profit remaining after reinvesting 40% of the profit. How much will A get? So in this case, ratio of their investment is 3:7. So sum of ratios equal to 3 plus 7 equal to 10. Now A's share equal to rupees 3/10. 10 टोटल है, उसमें से 3 पार्ट उसका 3/10 इंटू 60,000 प्रॉफिट था, लेकिन उसमें से 40%
री इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब 60,000 का 60% ही प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, उसका 60% का ही शेयर मिलेगा। तो 60,000 का 60%, 60,000 का 60%, सो 60,000 इंटू 60/100। तो ये आ गया हमारे पास, मतलब हम प्रॉफिट, इतने प्रॉफिट में से ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि 40% तो री इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। सो दिस गिव्स, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से और ये ज़ीरो कैंसिल, एंड दिस गिव्स 10800, 10,800. So this is our answer. Example number 4. ABC entered into a partnership with capital of 25 rupees 25,000, rupees 30,000 and rupees 15,000 respectively. A is a working partner and he gets 30% of the profit for managing the business. The balance profit is distributed in the proportion to the capital investment. At the year end, A gets 20 rupees more than B and C together. Find the total profit and the share of each. So in this case, first let total profit equal to rupees X. So amount obtained by A for managing business equal to 30% of the profit. So 30% of the profit is rupees, total profit is X, so 30% of X. So this is equal to 0 से 0 cancel, this equal to rupees 3x upon 10. Therefore balance profit equal to rupees x minus 3x by 10, and this is equal to rupees 7x upon 10. अब ये 7x upon 10 ये तीनों में डिवाइड होगा। 30% तो उसको ए को एक्स्ट्रा मिल गया बिजनेस मैनेज करने के लिए, एंड देन 7x अपॉन 10 रुपीज़ को हम बाकी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो हियर फर्स्ट रेशियो ऑफ कैपिटल्स equal to 25,000 is to 30,000 is to 15,000, and this gives 5:6 is to 3, and sum of the ratios equal to 5 plus 6 plus 3 equal to 14. Therefore A's share equal to rupees, A शेयर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 पार्ट है इसका, तो 5/14 इंटू कितने प्रॉफिट में से 7x अपॉन 10, ये प्लस मैनेजिंग बिजनेस का प्रॉफिट उसको कितना है 3x/10. सो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, एंड दिस गिव्स rupees 11x upon 20. So this is the share of A. Now B's share equal to rupees 6/14 into 7x upon 10. 2 times
then this 3 times, and this gives rupees 3x upon 10. Now C's share equal to rupees, कितना है शेयर, 3/14 इंटू 7x अपॉन 10, सो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड दिस गिव्स rupees 3x/20. Now according to the question, A gets 200 rupees more than B and C together. So A's share is 11x upon 20 minus B's share 3x upon 10 and A 3x upon 20. So A gets 200 more than B and C together. So B and C together जितना भी लेंगे उससे A के पास कितना रुपीस ज़्यादा है, 200. And this gives, हम इसको सॉल्व करेंगे, so this gives x equal to 2000. So total profit equal to rupees 2000. So हमारे पास x कितना आ गया, 2000. ना हम A का शेयर निकाल सकते हैं. A's शेयर equal to 11x upon 20, rupees 11x upon 20. So substitute the value of x, we get 11 into 2000 upon 20 equal to rupees 1100. Now B's share is equal to rupees कितना है, 3x upon 10, rupees 3x upon 10. This gives x 3 into 2000 upon 10 equal to rupees 600, and C's share equal to rupees 3x upon 20. So this gives rupees 3 into 2000 upon 20 equal to rupees 300. तो ये हमारा आंसर हो गया. दिस इज़ आवर आंसर. अब देखिए आंसर को चेक करने के लिए हम इन तीनों को सम करके देख लें. 1100, 600 एंड 300. अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, रुपीज़ 2000. और हमारा नेट प्रॉफिट भी कितना है, 2000. एक्स हमारा कितना आ रहा है, 2000. तो ये आंसर हमारा राइट है. ये हमें चेक करने का तरीका है कि हमने जो सम किया है वो करेक्ट है कि नहीं. ना एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. 2 person A and B take a field on rent. A put on it 21 horses for 3 months and 15 cows for 2 months. B puts 15 cows for 6 months and 40 sheep for 7.5 months. Now, next line. If in a day 3 horses eats as much as 5 cow eats and 6 cows as much as 10 sheep, what part the rent should A pay? अब देखिए यहाँ पर 3 काऊ है, हॉर्स है एंड शीप है. तो 3 तरह के एनिमल्स हैं और तीनों ही उनकी खाने की स्पीड अलग अलग है, अलग तरह से खाते हैं. तो जब हमको रेशो निकालना होगा तो हमको किसी एक यूनिट में, किसी एक तरीके में हमें बताना होगा. तो हम क्या करें कि शीप सबसे छोटा है तो हॉर्स और काऊ दोनों को हम शीप की टर्म में चेंज करेंगे. कैसे, देखिए 6 cows eat as much as 10 sheep. So it means 6
cows equal to 10 sheep. This implies 1 cow equal to 10 upon 6 sheep, or we can say 5 upon 3 sheep. ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया. सेकंड क्या है? 3 horses eat as much as 5 cows. It means this is first equation. This means 3 and 3 horses eat as much as 5 cows eat. So 3 horses equal to 5 cows, or this gives this means 1 horse equal to 5 upon 3 cows, and 1 cow equal to 5 by 3 sheep. So this gives 5 by 3 into 5 by 3 sheep, or this is equal to 25 upon 9 sheep. So this is second. तो हमने काउ को और हॉर्स को दोनों को शीप के फॉर्म में लिख दिया. अब क्योंकि दोनों सब शीप के उसमें टर्म्स में आ गए, अब हम इनका रेशो निकाल सकते हैं. देयरफॉर रेशो ऑफ शेयर्स ऑफ A and B. So A put 21 horses for 3 months. So 21 horses for 3 months. और इसको हम शीप की टर्म में लिखें तो दिस इज इक्वल टू 25 अपॉन 9 प्लस 15 cows for 12 months. So 2 months. So 15 cows for 2 months into काउ को शीप की टर्म में लिखेंगे तो 5 by 3 is to B puts 15 cows for 6 months. So 15 cows for 6 months और काउ को शीप की टर्म में लिखेंगे तो 5 by 3 plus 40 sheep for 7.5 months. So 40 sheep for 7.5 months को हम लिख सकते हैं 15 upon 2, क्योंकि ये शीप्स है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड तो ये हमारा ए का पार्ट आ गया और ये हमारा बी का पार्ट आ गया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हमारा 20 टाइम्स. सो दिस गिव्स, जो हमारे पास इनके रेशो आएंगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 225 is to 450 and this gives, और this is equal to लगा देंगे, this is equal to 1 is to 2. So sum of ratios equal to 1 plus 2 equal to 3. So total part is 3. Hence part of the rent paid by A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 में से कितना पार्ट ए को देना है? 1 को, तो 1 by 3. तो पार्ट ऑफ द रेंट पेड बाय ए इज 1 by 3 and this is our answer. Example number 6. A, B and C invest to start a restaurant. The total investment was 3 lakhs. B invested rupees 50,000 more than A and C invested 25,000 less than B. If the profit at the end of the year was 14,400, then what is C's share of the profit? So here let A invests rupees X. Therefore, B
B's investment equal to rupees x plus 50,000 and C's investment equal to rupees x plus 50,000 minus 25,000. This is equal to rupees x plus 25,000 and total investment is 3 lakh rupees. So this implies x plus 50,000 plus x plus 25,000 equal to rupees 3 lakh. So this gives, ये हमारे पास आ जाएगा, this gives 3x equal to 2,25,000 and this implies x equal to rupees 75,000. So A invest 75,000. Now ratio of investments equal to 75,000 A share and B कितना है x plus 50,000 means 1,25,000 and C's x plus 25,000 means 1 lakh. So this gives 3:5:4. So sum of ratios equal to 3 plus 5 plus 4 equal to 12. Now हमें क्या निकालना है? C share and profit is 14,400. So C share equal to 4/12 into 14,400. 4 से कैंसिल 3 times. Now 3 से कैंसिल करेंगे 3 4 times and 8 times 0 0 and this gives rupees 4,800 and this is our answer, 4,800. Now example number 7th. A, B and C are partners in a business. A, whose money has been used for 4 months, claim 1/8 of the profit. B, whose money has been used for 6 months, claims 1/3 of the profit. C invested rupees 1,560 for 8 months. How much money did A and B contribute? So here first we let total profit equal to rupees x. Then A's share equal to 1/8 of the profit means rupees x by 8 and B's share equal to 1/3 of the profit means rupees x upon 3. So this implies C's share equal to x, total x है x minus x by 8 plus x upon 3 rupees. This gives x equal to x, इसको सॉल्व कर लेंगे, then we have x minus 11x upon 24 equal to rupees 13x upon 24. So this is the share of C's. Now ratio of shares of A, B and C कितना हो जाएगा? X by 8
is to x by 3 is to 13x upon 24. So this gives 3 is to 8 is to 13. Now let A invested rupees Y for 4 months and B invested rupees Z for 6 months. Then Y into 4 upon 1560 into 8 equal to 3 by 13. ठीक है, क्योंकि y का जो z का अमाउंट है, z का अमाउंट कितना है 1560 फॉर 8 मंथ्स. तो ये y का इसका अमाउंट हो गया c का, और इसमें से और x ने कितना इन्वेस्ट किया है 4 मंथ्स के लिए y रुपीज़, तो 4y इसका हो गया, और इनका रेशो कितना है 3/13. यहाँ से ले लिया, ये 3 और ये 13. तो हमने ऊपर x का अमाउंट और नीचे c का अमाउंट, a का अमाउंट और c का अमाउंट लिख दिया, और इधर रेशो से हमने a का और c का अमाउंट लिख दिया. सो दिस गिव्स 52y equal to 37440. This implies y equal to rupees 720. It means 720 rupees किसके हुए A के, A ने इतना इन्वेस्ट किया, एंड B इन्वेस्टेड, B का भी हम ऐसे ही करेंगे. B ने Z रुपीज़ 6 मंथ के लिए लगाया, तो Z इंटू 6 अपॉन C से चलें तो C का 1560 इंटू 8, एंड दिस गिव्स B का कितना है 8, इसका रेशो कितना है 8, और C का कितना है 13. ये कर दिया, एंड दिस गिव्स 78Z equal to 99840. This implies Z equal to 1280 rupees. So ये A का इन्वेस्टमेंट आ गया और ये B का आ गया, तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया इनका. तो आंसर इज कंट्रीब्यूशन is rupees 720 and B's contribution equal to rupees 1280. Hope you enjoyed today's lesson. I will be uploading next video soon. Please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming video. Thank you.